हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे TET मेडिकल में साइकोलॉजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड द क्वेश्चन इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर इज ऑप्शंस है पनिशमेंट, रिवॉर्ड, लाउड नॉइस या फियर। एंड द राइट ऑप्शन इज बी विच इज रिवॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज ईजियर इन फर्स्ट ऑप्शन है सिमिलर सिचुएशन, डिसिमिलर सिचुएशन, सिमिलर एंड डिसिमिलर सिचुएशन या नन ऑफ दिस। एंड द राइट ऑप्शन इज ए विच इज सिमिलर सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है STM स्टैंड फॉर सेंसरी टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, सिंपल टर्म मेमोरी या नन ऑफ दिस। एंड द राइट ऑप्शन इज बी विच इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राइड कंस्ट्रक्टेड अ मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी विद द 3 पार्ट्स, इट, ईगो एंड नेक्स्ट इज सुपर ईगो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द सेंट्रल कंसेप्ट इन द रोजर्स थ्योरी। ऑप्शंस है सेक्स, एज, सेल्फ या नन ऑफ दिस। एंड द राइट आंसर इज सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज IQ ऑफ अ पर्सन इज। ऑप्शंस है 90 से लेकर 110, 130 टू 150, 70 to 90, 50 to 70। एंड द राइट आंसर इज 90 to 110। Next question है in how many types did Sheldon divide the personality on the basis of body build? Options है 2, 3, 5, 7 and the right answer is 3. Next question is withdrawal into oneself is a developmental disorder which is known as। options है antisocial behavior, autism, mental retardation या none of these। and the right answer is none of these। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकेन, निकोटीन एंड टबैको आर डैश। ऑप्शंस है स्टिमुलेंट्स, डिप्रेसेंट्स, हेल्यूसिनोजेंस या नन ऑफ दिस। एंड द राइट आंसर इज द स्टिमुलेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the one tries to attribute one's own lapse on somebody else, this process is known as reaction formation, repression, projection या none of these। and the right answer is projection। Next question is during the conception period between 2 to 8 weeks is known as embryonic period। Next question is joy, anger, fear and surprise are called sensation, perception, emotions या thinking। and the right answer is emotions। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ये भी ज़रूर बताना कि आउट ऑफ 30 आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कि कितने क्वेश्चंस आप ठीक कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीजर इन विच existing schema is changed by adding or inclusion of a new information is called adaptation, assimilation, adjustment या egocentric। and the right answer is assimilation। next question है which of these is not a projective test of personality measurement। option है Rorschach Inkball test, thematic appreciation test, word association test या 16PF test। and the right option is D which is 16PF test। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट इज यूज टू मेजर द हियरिंग कैपेसिटी। ऑप्शंस है डेसीमीटर, डेसीबेल, डेसीपेन या डेसीपॉइंट। एंड द राइट आंसर इज द डेसीबल। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक दैट द रूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम cooperation between the people and not coming from an authority। heteronomous orientation, autonomous orientation, ethical principle orientation या cosmic orientation। and the right answer is the autonomous orientation। next question is in classical conditioning food is known as conditioned stimulus, unconditioned stimulus, conditioned response या unconditioned response। and the right option is B which is unconditioned stimulus। next question है who said that the person with a high IQ were not necessarily creative ideas could come from a person who did not have a very high IQ। and the right option is Torrance। next question is which parenting style result in impulsiveness, aggressiveness and lack the independent ability to take decision and responsibilities। options है authoritarian, reciprocal, indifferent, uninvolved, indulgent, permissive या authoritarian, autocratic। and the right option is A which is authoritarian, reciprocal। next question है who proposed that the language development is just like the physical maturation, if given adequate care it is just happens to the child। and the right option is A which is Benjamin Lee Wolf।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच रेंडमली प्रेजेंटेड वर्ड्स आर कॉल्ड इन द ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी वाइज मैनर इज कॉल्ड. ऑप्शंस है फ्री कॉल, रिकॉग्निशन, पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग या केटरिंग या category clustering, and the right option is B which is recognition. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड द क्वेश्चन इज द इनसाइट लर्निंग मॉडल was represented by options है Thorndike, Bandura, Tolman या Kohler, and the right answer is the Kohler. Next question है in which state of an Erikson psychosocial stages of development a person experience crisis in intimacy versus isolations. Options है adolescence, early adulthood, middle adulthood, late adulthood, and the right option is C which is middle adulthood. Next question है in which classification would a child with the intelligence quotient 105 be placed. Options are superior intelligence, above average intelligence, normal and average intelligence या below average intelligence. And the right option is C which is normal and average intelligence. Next question is this psychology has been considered a science since around 470 BC. Option A is correct. Next question है which social office thought in a psychology question है which school of thought in a psychology try to identify the basic element of sensation, images and the feeling. Options are structuralism, behaviorism, functionalism and psychoanalysis, and the right option is A which is structuralism. Next question है intelligence can be defined as the ability to think abstractly and learn from experience. Option C is correct. Next question है which lobe of brain is involved in planning, decision making and some aspects of language? Frontal, parietal, temporal या occipital lobe, and the right option is A which is frontal lobe. Next question is the oldest method used in the psychology is. Options are introspection, observation, case study, clinical method, and the right option is A which is introspection. Last question but not the least question है an overprotected child will tend to display. Options है aggressiveness, defensiveness, immaturity या negativism, and the right option is A which is aggressiveness. That's all for the today. प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके आउट ऑफ 30 कितने करेक्ट क्वेश्चंस हैं.